Hello everyone, my name is Ashish Rahi and today my topic is about the Infection Control Committee and its functions. The objective will be understand the basic infection control concepts in a hospital and what are the causes of nosocomial infection and the infection control program. So we will discuss about that. The outlines for this infection control program is the definition, introduction, epidemiology, control and prevention and strategies. What are the definition of infection control? It is the process by which healthcare facility develop and implement specific policies and procedure to prevent the spread of infection. Means हमें हॉस्पिटल के अंदर इन्फेक्शन को कैसे रोका जा सकता है और कैसे रोकना है और क्या उसके लिए मेथड इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं और क्या उपाय किए जा सकते हैं, उसको हम बोलेंगे इन्फेक्शन कंट्रोल. What is the nosocomial infection? The nosocomial infection is the infection contracted by a patient or staff member while in a hospital. अगर कोई हेल्थ केयर फैसिलिटी लाइक स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट और डॉक्टर अगर किसी हॉस्पिटल में काम कर रहा है तो उसको अपने आप को कैसे बचाना है किसी पेशेंट से इन्फेक्शन से, लाइक किसी को वायरल इन्फेक्शन है और किसी को एनी कम्युनिकेबल डिजीज़ है तो उस पेशेंट से अपने आप को कैसे बचाना है उसको हम बोलेंगे नोसोकोमियल इन्फेक्शन. And disinfection is the process by which there is inactivation of microbial infection. डिसइंफेक्शन क्या होता है? किसी चीज़ को डिसइंफेक्ट करना, लाइक किसी इन्फेक्शन को कंट्रोल करके उसको किल करना, माइक्रोबियल ग्रोथ से बचाना, लाइक स्पोर्स, बैक्टीरिया, वायरल एंड फंगल इन्फेक्शन को किसी भी केमिकल से और किसी डिसइंफेक्टेंट से किल करना इज कॉल्ड डिसइंफेक्शन. What is sterilization? The sterilization is the use of physical or chemical procedures. Physical और chemical procedure like किसी chemical को यूज़ करके और physical में like autoclave यूज़ करके हम किसी चीज़ को कैसे किसी चीज़ से माइक्रोबियल इन्फेक्शन से या बैक्टीरिया से बचा सकते हैं, इसको हम बोलेंगे स्टरलाइजेशन. इसके लिए हम स्टीम स्टरलाइजेशन कर सकते हैं, हीट स्टरलाइजेशन कर सकते हैं और केमिकल स्टरलाइजेशन कर सकते हैं. And infection control is necessary. Why? It is necessary to prevent any disease, any infection and any cause of death, or to prevent the infection for health staff like physicians, doctors and nurse. तो infection control क्यों जरूरी है? Because it is a common problem of 9% prevalence के लिए और it is the beneficial for morbidity, mortality and healthcare cost. Epidemiology of nosocomial infections. What are the epidemiology of nosocomial infection? As I said, nosocomial infection is the infection caused by patient to any healthcare staff, like surgical incisions. While during surgery, it can be spread during surgical incisions, urinary tract or lower respiratory tract or any bloodstream, or like gram-positive cocci, enterococci or like aerobic negative bacilli. So these are the epidemiology of nosocomial infections. Thank you.